everyone, it's Shriya here and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ लताफा का खामरा परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट ऑफ विद द पैकेजिंग. लताफा की पैकेजिंग काफ़ी यूनिक और काफ़ी ब्यूटीफुल होती है. लाइक लताफा इज़ नोन फॉर गुड पैकेजिंग एंड दिस इज़ नो एक्सेप्शन. इट कम्स विद अ वेरी सॉलिड कार्डबोर्ड बॉक्स एज शोन हियर एंड इसमें एक बेस है, लाइक अ प्लेटफॉर्म और अ स्टेज दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द खामरा परफ्यूम to sit. And once you open this, here is the gorgeous presentation of Khamrah. Now one point to note here is यहाँ पे जो एक hologram बना रहता है लताफा का, this logo needs to be there on your perfume to ensure कि आपको original copy मिला है. अगर ये missing है, that means the perfume that you have received could be a fake. Now this is how the presentation is. ये ऐसे एक स्टेज की तरह है एंड पीछे एक मिरर है एंड उसमें ये बॉटल बहुत ही स्नग टाइट है. मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू पुल एंड रिमूव दिस वन. एकदम डेप्थ में जाके बैठी रहती है ये. एंड देन इस मिरर के ऊपर भी खामरा लिखा हुआ है. लाइक द प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग. इट इज़ गिफ्टेबल. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन वाला गिफ्ट to be given to your loved ones, I think you can go for this one. Coming to the bottle, this is what the bottle looks like. It literally looks like a peg. So basically this is a beautiful kind of like a boozy looking bottle out there. This is a dupe for Kilian's Angel Share. Kilian's Angel Share a circular bottle में आती है with similar patterns made on the glass bottle. So the packaging, the presentation is almost similar to that and this is a dupe for Kilian's Angel Share. नाउ इसके ऊपर यहाँ पे लताफा खामरा लिखा हुआ है एंड सब तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं कांच के बॉटल के ऊपर. अ वेरी हैवी एंड अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक कैप अगेन विद द सेम पैटर्न आउट देयर एंड दिस इज द एटोमाइजर. 100 ml of this perfume cost for 3500 in India and बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे कि फ्राइडे चार्म, परफ्यूम पैलेस, फ्रैग स्टॉक्स, इन सब वेबसाइट्स पे आपको थोड़ा सा रिलेटिवली कम प्राइस में ये परफ्यूम ज़रूर मिल जाएगा इफ़ इट इज़ अवेलेबल. मतलब ये बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक रहता है एंड यू हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स फॉर द नेक्स्ट बैच टू कम. सो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू गेट दिस परफ्यूम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एंड द इंटरनेट ब्लू अप विथ द रिलीज ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम बिकॉज Kilian perfumes are extremely expensive. So this was like a very close dupe to it. So ये बहुत ज़्यादा famous हो गया. Now let's talk about the notes breakdown and then we'll get to how I feel and what I feel about this perfume. Let me just spray this. So first of all, this perfume is super gorgeous, super unique. And it is a very loud perfume. Now let's talk about the notes breakdown and then I'm going to give you a good breakdown of these things. So this has a beautiful opening of very strong Indian spices. It has a cinnamon and nutmeg and slight hint of bergamot in this. Now I'm telling you, like, you are not going to like it if you don't like a cinnamon based perfume. This one is a very strong cinnamon forward perfume. Like the moment you apply, the moment the perfume fills the air, you can distinctly smell Indian spices in here and cinnamon being the strongest. बिल्कुल ऐसा लगता है कि cinnamon stick सूंघ रहे हो आप जाके along with some sweetness, like cinnamon stick dipped in syrup, sugar or something like that. मतलब उतना मीठा सिनेमन का इसमें फील आता है. नाउ बर्गमोट की वजह से एक बिल्कुल हल्का सा टैंजीनेस ऐड होता है बट बिलीव मी वो कहाँ गायब हो जाता है वो पता भी नहीं चलता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ़ यू आर नॉट नोज ट्रेंड. सो इट्स नॉट लाइक खट्टापन नहीं आपको फील होगा. इट्स अ नोट दैट इज लाइक जस्ट कमिंग एंड गोइंग. अगेन nutmeg and cinnamon just dominates the entire top note here. So in the middle notes, it's very interesting. It gets more interesting because you have the note of dates here. The date is super juicy. It's like the kind of date which is not completely dried and not completely juicy. It's somewhere in between. It's in the process of getting dried. So it is that kind of a date, kind of like a juicy plus dry date. Then it has a praline which just adds to the sweetness. Plus it has थोड़े से फ्लोरल नोट्स इन है, थोड़े से वाइट फ्लोरल्स हैं इसमें. ट्यूबरोज है एंड महोनियल फ्लावर है. दोनों ही वाइट फ्लोरल्स हैं एंड दोनों ही इसमें बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है. मतलब आपको बिल्कुल भी एक वाइट फ्लोरल फील इस परफ्यूम से टेक अवे नहीं आएगा. इट इज़ सो वेल ब्लेंडेड कि आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि अरे ये तो वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. नो, इट्स गोइंग टू स्मेल एज अ गुड गुरमांड फ्रेग्रेंस.
Now the base notes is something that gets super interesting again. So इसके बेस नोट्स में इट हैज़ अगेन एडेड स्वीटनेस ऑफ वेनिला एंड बेंजोइन, उसकी वजह से ओवरऑल आपको वो स्वीटनेस एलिमेंट टॉप नोट से लेके बेस नोट्स तक वो स्वीट एलिमेंट मिस नहीं होगा, बिकॉज इट कीप्स एडिंग ऑन टू द स्वीटनेस. वेनिला एंड बेंजोइन आर super strong in this fragrance. You will observe that it is overall very sweet fragrance. Then it has tonka beans, myrrh, akigali wood and amber wood. नाउ दो टाइप के इसमें वुडी नोट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक बहुत ही मैच्योर वुडीनेस का बेस आता है इसमें. टोंका बीन्स मुझे पर्सनली उतना इसमें नहीं पता चलता. कहीं ना कहीं मेरे लिए टोंका बीन्स थोड़ा सा खो सा गया है इसमें, बट इसमें वुडीनेस बहुत प्रोमिनेंट है. सो ओवरऑल अगर आप सिनेमन नोट के बारे में सोचना शुरू करो तो सिनेमन स्टिक्स के बारे में अगर सोचो, उसमें भी एक डिस्टिंक्ट वुडीनेस रहती है. सो इस फ्रेग्रेंस में ओवरऑल जो जिस्ट वही है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ वेरी स्वीट वार्म इंडियन स्पाइसी काइंड ऑफ लाइक अ एरोमेटिक स्पाइसी ब्लेंड आउट देयर. अब अगर मुझे इसके नोट्स का इतना नॉलेज ना हो और मैं सिर्फ स्प्रे करके परसीव कर रही हूँ परसीव कर रही हूँ परफ्यूम को, सो माई रिएक्शन इज दिस वन इज अ एप्पल सिनेमन पाई. Literally it's like sweet, it has this juicy apple का note. Not just juicy, imagine that आपने पैन के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के उसमें एप्पल को एक्चुअली में कैरमलाइज्ड काइंड ऑफ किया है शुगर डालकर. मतलब यू हैव कैरमलाइज्ड दैट एप्पल. इट्स नॉट द नेचुरल स्वीटनेस ऑफ एप्पल, बट इट इज़ द एडेड शुगर, caramelized sugar plus apple. It's that kind of a juicy apple feel to it, and it has this kind of like a crusty vanillic bakery sort of a feel to it. So this perfume no overall smells like a apple pie to me, and this is a very kind of like a sweet vanillic crusty delicious spicy fragrance, something that I will definitely enjoy wearing in the colder months, in the colder weather or in the evening time. मैं literally इसको summer time में इसको नहीं पहन पाती क्योंकि इसकी spiciness बहुत तेज़ है. So definitely this one is a winter wear fragrance for me, and this one is a very cozy, a very warm fragrance, and you know it just makes a very strong perfume capsule around me. And this is something which is long lasting, which is highly projective. It fills the room, it has great sillage, and this is something which you know even like from 4 feet you can notice that somebody is wearing a strong sweet spicy fragrance. इसकी लॉन्जिविटी मेरे ऊपर करीब 8 से 9 घंटे चल जाती है विथ अराउंड 7 to 8 sprays. सो आप मान के चलो कि 1 spray is 1 hour of longevity is what you can conclude out of this. So based on the number of sprays you will get the longevity of the perfume accordingly. Like I said, it leaves a trail, it's a compliment getter, it's a fragrance which people are going to notice, and it is not a safe blind buy because the spiciness is very overwhelming in this perfume. Like it literally hits the nose and it hits the brain. If you have headache issues or if you have migraine issues, just I think this is going to give you a headache. Coming to the occasion and whether this one is, you know, gender neutral kind of a fragrance, yes, it is a unisex fragrance. Men and women can both equally enjoy this one. It has a distinct maturity to it. Like I just do not see any teenagers rocking this or wearing this at all. I literally see like late 20s onwards somebody wearing this, rocking this and loving it. I also feel that there is like a boozy note going on in the background here which is not mentioned in the notes as such, but मुझे इसमें एक cognac note perceive होता है, which is not mentioned in the note breakdown. Just like apple is not mentioned in the notes breakdown, but I do get apple and cognac notes additional to what it is. So I think that is what is giving the booziness that is present in here, but wo notes breakdown mein nahi hai, so I just wanted to put it out there. Now I just feel that this is the kind of fragrance which is not very appropriate for office wear because it's just super loud. I think this is a good party wear fragrance. Any party per se, like it just doesn't matter whether it is Indian shadi party or it is like a Western kind of a party. I think this is a party perfume. Like this is loud, this is out there, this is like a tension grabber. It is I am present and I am here to enjoy kind of a fragrance. It has a sense of a different aura to it, like a very loud dominating aura. So I think this is like a very 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 loud and dominating fragrance. So is this juice worth the money, like 3,500? I say yes, because you know what, you can control the amount of perfume that you're putting on yourself, and you have that power whether you want it to be faint or whether you want it to be loud. So I think these perfumes are very universal in that way, in the way you can use it. The only thing is you need to love Indian spices to love this fragrance.
Now, I do see that this is a unisex fragrance, but my husband uses this and he says that he feels that this is more masculine fragrance. I kind of agree and disagree at times, because I agree because when he puts this perfume, I like this perfume more on him. So that's why I feel that maybe it is like masculine leaning, and yeah, it's better off on men. But when I put the fragrance on myself, I love the fragrance on myself as well. So a little bit more I like it on him as compared to me. So I could agree on the fact that this is a slightly, just a slight bit masculine leaning. My overall rating for this perfume is 10 out of 10. I said it, I know that it is not a safe blind buy. It is unique, it is good pricing, it is good quality stuff, good longevity, good performance. There's nothing actually that I can complain about this one. It's a loud fragrance and it is kind of like a party animal kind of a fragrance, and I'm here for it. Like, I love this fragrance. I'm giving it 10 out of 10. I love how beautiful this one is. So that concludes today's video. I hope that you enjoyed watching this review. If you did, do hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.